ઘણા કારણ વગરના આમ ધૂણતા હોય ને પછી પાછા વાતો કરે, મને હડમાન આવે, મને અંગમાં હડમાન આવે. હનુમાન રેવા દે. હનુમાનને કોઈ ન મળ્યું ને તું મળ્યો. અને હનુમાન આવે ને, એક તો તારા જેવાને આવે નહીં, અય્યાશ વ્યસની, એને હું હનુમાન આવે. હનુમાનનો આવેશ સંભવી નહીં. जो हनुमान जी में ब्रह्मचर्य है, जो संयम है, जो राम भक्ति है, और हनुमान का आवेश यदि होए तो वो राम सेवा में लग जाएगा. ये हनुमद आवेश का ये परिणाम, प्रभु की भक्ति में, प्रभु की सेवा में लग जाएगा. वो गाम आखू पगे लगे એટલા માટે હનુમાનજીને આવે. ઘણા ઠેકાણે છે ને આ બધું આ કોઈ આ ટીકાના અર્થમાં તમે નહીં લેતા, પણ મનોવૈજ્ઞાનિક જે કહે છે એને આધારે કહું છું. એ ઘણીવાર ઘણી બહેનોને ને માતાજીના ને આવેગ આવે ને, એનું કારણ ઘણીવાર એ હોય કે આમ એને કોઈ પૂછતું ન હોય, એનું કોઈ બહુ આમ મહત્વ ન હોય, હાહુ વારંવાર વાત વાતમાં ખીજાતા હોય, ધણી કંઈ ધ્યાન દેતો ન હોય, અને પછી બિચારી એકદમ સપ્રેસ્ડ એવી હોય, અને એની બધી જ વૃત્તિઓ જે સપ્રેસ્ડ હોય એ પછી ઘણીવાર આવી રીતે પ્રગટ થાય. અને એને પછી ક્યાંક ચંડીપાઠ થતા હોય, ક્યાંક હવન હોય, અને એમાં પાછું શક્રાદય બોલાતું હોય, અને એ સમય પછી એને માતાજી આવે. માતાજી આવે ને પછી એનો જે મહિમા થાય, બધાનું ધ્યાન, એટેન્શન સીકર હોય, પછી બધાનું ધ્યાન ત્યાં, બાકીનું બધું એક બાજુ રહે, અને બધા ટોટલી આના ઉપર. એટલે પહેલાં તો 5-10 મિનિટ તો પેલું બધું હાલે, અંબોડો ખુલી જાય, વાળ છૂટા થઈ જાય, બ્રાહ્મણોએ ક્યાંક હવન ભવન કરવા ચોટલી બાંધવી પડે, અને અહીંયા અંબોડો ખુલી જાય સામાન્ય રીતે, ત્યાં બંધન ન હોય. અને પછી આપણે દર્શન કરીએ. તો એની હાહુ પગે લાગે, જે ધમકાવતી હોય, વઢતી હોય, એને હાહુ પગે લાગે, ખોળો પાથરીને પગે લાગે, માં લીલી વાડી રાખો, આમ કરો, કૃપા કરો. યાને કેટલો સંતોષ થતો છે અંદરથી, ઝુકી ઝુકી. યજ્ઞમાં જેટલા આવ્યા બધાય પગે લાગે વારા ફરતી માતાજીને, પણ એનો ધણી એને શું કરવું? એ બચાડો મૂંઝાતો હોય. પગે લાગે તોય પ્રોબ્લેમ, ન લાગે તો બધા એમ કે માતાજીને પગે નથી લાગતો, અને પાછો પગે લાગે તો ત્યાં એની પત્ની હોય, એટલે પગે લાગવું કેમ ન લાગે? પણ આને તો એને ઝુકાવવું હોય ને, એટલે પછી એકદમ ગુસ્સામાં હોય માતાજી. પછી બધા પૂછે, આ તો આપણા લોક સાહિત્યકારો કે છે ને, ખમૈયા કરો, ખમૈયા કરો, હજી એક પાપી નથી આવ્યો શરણે. और देखो, भगवदावेश नहीं होता ऐसी भी बात नहीं, ये भी आप समझ लो. लेकिन कहीं कहीं जब नाटक होता है तो पता चल जाता है. मैं घणी वार कथाમાં પેલું કીધું છે કે કથામાં એક બેનને માતાજી આવ્યા, ત્યાં તો પછી અમારે કથા રોકવી પડી, થોડી વાર કીર્તન કર્યા, બધા માતાજીને પગે લાગ્યા. સારી વાત, અંતે તો પરાંબા ભગવતીને જ એની અંદર જોઈને પગે લાગે જ ને બધા, અચ્છી વાત. પણ પછી પાછા ખીજાણા યજમાન ઉપર,
અને હું ખીજાણા, એને ખબર કે યજમાનને સાડીનો બિઝનેસ છે. એ બેન રોજ આવતા હતા કથામાં. એટલી એને ખબર પડી ગઈ કે આ તો ઓલા બહુ પ્રસિદ્ધ સાડીના સ્ટોરવાળા એ કથા કરાવે છે. અને વ્યાસપીઠ ઉપર આપણે મેં દર્શન કર્યા છે, આ સાક્ષી છું. તો ખીજાણા, મોટો અપરાધ થયો છે તમારાથી. ક્યા હુઆ? तुमने माता जी को साड़ी नहीं धराई. अरे हाँ, गलती हो गई. हम कल ही साड़ी लेकर के माता जी के मंदिर में जाकर के हम धरा देंगे. तो फिर और गुस्सा किया कि मां यहां आई है और तुमको धराने वहां जाना. तो पाछी व्यवस्था करवा पड़ा, लाओ लाओ लाओ. ઘણા પછી હોય ને પાછા, એ તો અંદર અંદર કહે ને કે માતાજી હાડીનું કરી લીધું. જમીન જાહે હાડી લઈને. અને ત્યાં અચાનક એ બધી હાડી આવે ને હજી બધું કંઈ થાય એ પહેલા અચાનક એક ભાઈ દોડતા આવ્યા. અને આ બેન જેને આવેશ આવ્યો હતો ને માતાજીનો, એને જ આવીને કીધું કે એ બેનનું નામ હતું, એ નામ લઈને કીધું કે અરે બેન, તમારા છોકરાનો એક્સિડન્ટ થયો, એને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. અરે મારો દીકરો, બધું બધું ઓસરી ગયું, ઉતારો તાર બધો વયો ગયો. મારો દીકરો એમ કહીને બેને જે દોટ મૂકી, મેં કીધું આ હાચી માં. આ જે ધોડીને ગઈ ને એ અસલી માં. ઓલી ધૂણતી હતી એ જે હોય એ, બાકી આ ધોડીને ગઈ એ અસલી માં. તો એમ કઈ આપણને હનુમાન આવતા હશે? માતાજી આવે ને પછી પાછા ભોગ માગે. એ તો કરુણામયી છે. માતાજીના નામે ભોગ આપે, બલિ ચડાવે. એ તો સર્વોપકાર કરણાય સદાર્દ્ર ચિત્તા. સદા આર્દ્ર ચિત્તા है पराम्बा भगवती. थोड़ा सा बिजली में वो वेरिएशन आता है वोल्टेज में, નથી ઉડી જાતા તમારા ફ્રીજ, નથી ઉડી જાતી તમારી ટ્યુબલાઇટો, નથી ખરાબ થઈ જતા તમારે રેફ્રિજરેટરો અને એર कंडीशनरों. डैमेज हो जाते हैं ना सारे इक्विपमेंट्स. थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया, इसलिए स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है ना. तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया और वो सारे इक्विपमेंट्स डैमेज हो जाते हैं या तो निकम्मे हो जाते हैं. तो यहां भी कला और उस फोर्स, उस ताकत की मात्रा कितनी, थोड़ी सी मात्रा बढ़ गई और तुम्हारा शरीर उस योग्य नहीं, तुमने उस योग्य शरीर को बनाया नहीं, उड़ी जाओ. इसलिए योगी अपने शरीर को तदनुसार उस पावन चेतना के अवतरण के योग्य भी बनाता रहता है. अब आप देखिए ना, वो केवल वो वेट लिफ्टर्स होते हैं ओलंपिक में भी, तो कभी कभी वो उठाते हैं, देखो कितने कांपते हैं. और उसने प्रैक्टिस करके अपने शरीर को वैसा तैयार किया है, और फिर इतना किलो वजन, और फिर थोड़े मिनट के लिए या थोड़े सेकंड के लिए जो उसका निश्चित समय है यूं खड़े रहना पड़ता है, तो कभी हिल जाते हैं, कांपते हैं. और जितनी ताकत ज्यादा तो फिर उस वजन को उठाने के लिए उतने ही मजबूती से वो खड़े रहते. प्रैक्टिकल दुनिया में हम देखते हैं तो शरीर कांपने लगता है. ધૂણવાનું કદાચ એમ હોય, આવેગ.
આપણને ખબર નથી પૂરી, આ તો એક એઝમ્પશન कांपने लगता है आदमी। એટલે તરત પછી લોકો કે પવન આવ્યો, कांपने लगते। पितरों की शक्ति को हमारा शरीर भी ले नहीं पाता, क्योंकि हमसे ज्यादा शक्ति पितरों की है, पितृलोक। वहां 15 दिन का दिन, 15 दिन की रात, ऐसे एक मास में उनकी तिथि, डेट चेंज होती है। देवताओं का उससे भी अधिक। तो उत्तरोत्तर अलग अलग लोक में अलग अलग सब रहते हैं कि ये मनुष्य लोक है, ये पितर लोक है, ये गंधर्व लोक है, ये देवलोक इत्यादि जो कहा गया है कि ये भूर लोक है, ये भुवर लोक है, ये स्वर लोक है, महर लोक है, जन लोक है। चेतना के विभिन्न स्तर। तो देवर्षि नारद ने शाप दिया और देखो चेतना के निम्न स्तर पर गिर गए, वृक्ष योनि में वृक्ष बन गए नलकुबर और मणिग्रीव। इसलिए साधक को चाहिए कि संतों महापुरुषों का सदा आदर करे। हालांकि इसको गिराया उसमें देवर्षि नारद का अनुग्रह ही है। तुम जहां होंगे वहां भगवान तुम्हारे पास आएंगे। दोनों ने क्षमा मांगी, तब देवर्षि नारद ने कहा कि जब द्वापर के अंत में भगवान का प्रागट्य होगा, तुम्हारी छाया में वो खेलते तुम्हें नजर आएंगे और एक दिन स्वयं भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज देवर्षि नारद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। दामोदर लीला उखल के साथ बंधे हुए हैं, खांडणिया साथ। उखल એટલે ખાંડણીઓ, ગુજરાતીઓ ખાંડણીઓ। લાકડાનો રહેતો અને એટલો ઊંચો રહેતો કે એમાં ઊભા ઊભા ખાંડતા, અને ઘણીવાર તો હામ બે બહેનો કે હોય, એકવાર આનું જાય, બીજા આનું જાય, આનું જાય। धान्य को कूटते थे। तो ऐसे उखल के साथ बांध दिया, काष्ठ का उखल। नवल कुबर दोनों वृक्ष के रूप में खड़े हैं, दोनों के बीच में कम जगह, जगह तो हो लेकिन कम जगह हो तो भाई भाई भाई, नहीं तो प्राय ऐसा होता है, सिबलिंग्स में वैर होता है। भारूમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ગડબડ મોટે ભાગે થાય, ભાઈ ભાઈમાં, બેન ભાઈમાં, નાનપણથી જ સિબલિંગ્સમાં મારતા હોય, આવડા આને મારે, ઓલો એક ભેંકડો તાણે રોતો રોતો મમ્મી પાસે જાય, નાનપણથી જ હોય। इसलिए हम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की कथा सुनते हैं कि भाई भाई में, सिबलिंग्स में अनुराग हो, परस्पर प्रेम हो। तो भाई भाई लड़ते हैं, बहन भाई लड़ते हैं, बहन बहन लड़ती हैं, ये होता है। और लड़ने और प्यार करने के लिए બે જણા તો હોવા જોઈએ ને, પછી બે ભેગા રહેતા હોય, જાણીતા હોય। ઈર્ષા કોની થાય? તમે જેને જાણતા હોય એની। બહુ દુનિયાના જે મોટા બિલિયનર્સ છે એની ઈર્ષા થાય કે અબજો ભેગા કરી ગયો ભાઈ, એવી ઈર્ષા થાય? નહીં થાય એની। પાડોશીની થાય, પિતરાઈની થાય,
આપણાથી કનેક્ટેડ છે, ક્યાંક સંબંધ છે, એની ઈર્ષા થાય. બાકી ઓલો ભલે ના પોતાના જેટમાં ફરતો હોય, આપણને કંઈ નથી થતું. અને આવડો ખાલી એક નવી ગાડી લઈ આવે ને પાડોશી, અથવા તો ભાઈએ ફ્લેટ લીધો હોય, ત્યાં અંદર આપણે અગ્નિ પેદા થાય. बड़ी विचित्र दुनिया है, गजब का ये संसार है. दोनों के बीच में थोड़ी जगह थी और उसमें से भगवान निकल गए. उखल फंसा, भगवान आगे बढ़े और दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर धराशायी हो गए. दोनों की जड़ों से ये दोनों पुरुष प्रकट हुए. नलकुबर मणिग्रीव भगवान की स्तुति किए. वाणी गुणानुकथने श्रवणव कथाया. देखो वृक्ष योनि में है तो एक तो वो भी तपस्या है. ठंडी गर्मी वर्षा सब सहते हुए और एक ही जगह केवा हठ योगीओ बधी तपस्या करते. हाथ ऊंचो रखे तो हाथ ज ऊंचो रखे, बस एने हेठे ज न करे. एक ही जगह खड़े हैं तो खड़े श्री तो खड़े श्री, बैठेंगे नहीं सोएंगे नहीं. और एक ही जगह हिरण्यकशिपु तप करतो तो राफड़ो થઈ ગયો એની આજુબાજુ. तो सहा है वृक्ष के रूप में, तपस्वी है. और वृक्ष परमार्थी है. कहते हैं श्री कृष्ण की गैया इन पेड़ों की छाया में बैठती थी तो स्वयं धूप सह करके कृष्ण की गैयान को छाया दे रहे थे. इस अर्थ में गैयान की भी सेवा करी है. वृक्ष फल देते हैं, पत्थर मारने वाले को भी फल देते हैं. इस अर्थ में परमार्थी है. अपकार करने वालों पर भी उपकार करने की भावना. उपकार करे उसके ऊपर उपकार करे व्यवहार है. और अपकार करने वालों पर भी उपकार करे तो ये तो साधु पुरुष का लक्षण है. लेकिन उपकार करने वालों के प्रति अपकार करे ये तो हीनता है. ये गिरे हुए लोगों का काम है. जेनु खाए ने खोदे, ये गिरे हुए लोगों का काम है. तो वृक्ष तो अपकार करने वालों पर भी उपकार करने वाले हैं. इसलिए वृक्षों को संत की कोटि में रखा है. सरोवर तरुवर संत जन, चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारणे चारों दरिया दे. वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते. नदियां अपना पानी नहीं पीती. परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः. परोपकाराय सताम विभूतयः. और फिर कोई नया गोकुल में आ जाता तो उन्हें भगवान तक पहुंचाने में भी ये दोनों सेवा कर रहे थे वृक्ष के रूप में. कोई भी नया आदमी आ जाए बाहर गांव से और उसको जाना हो नंद बाबा के घर श्री कृष्ण का दर्शन करने, कृष्ण या नंद के घर पहुंचना हो तो पूछता था कि भाई नंद जी का घर कहाँ. तो गोकुल के लोग यही बतलाते थे, वो दो जो पेड़ खड़े हैं यमला अर्जुन, बस वही नंद जी का घर, उन्हीं के आंगन में है ये. तो लोगों को प्रभु तक पहुंचाने में भी एक अर्थ में निमित्त बन रहे थे. આટલું કરિયે તો એ ઘણું.
तुझ संगे जो कोई वैष्णव थाय तो तू वैष्णव साचो। આપણે કદાચ પોગી ન શકીએ, જેને કોકને પોગવું હોય એને થોડીક મદદરૂપ થઈએ ને. ઘણા જાત્રા ન કરે, જ્યાં હોય ત્યાં જ હોય, પણ જાત્રાળુને જમાડે. આ અમારે ડાકોરમાં હે પૂનમનો આટલો પેલી લોકો પગપાળા યાત્રા કરતા હોય આપણે ત્યાં ડાકોરમાં, લાખોની સંખ્યામાં લોકો. આ કોરોનાએ બધું, આ વખતે કોરોનાએ કહ્યું કે કોરોના इस साल कोरोना इक्कीस में देखेंगे। तो यहां द्वारका हो, चाहे अंबाजी हो, चाहे डाकोर जी हो, लोग पैदल यात्रा करते हुए जाते। और कई लोग होते हैं जो उनके लिए शिविर बना करके और उनकी सेवा में तत्पर होते हैं। बोलावी जमाड़े, पग दबावे, खमण ढोकड़ा खवड़ावे। निरंजन भाई मस्त खमण ढोकड़ा फूलेला फूलेला, एना पर साकर वाळू पाणी, नायला सदार्द्र चित्ता, बहु मस्त ढोकड़ा। लोग आवता जाए, गरम गरम ढोकड़ा चटनी खाता जाए, थोड़ी वार विश्राम करे, पछी यात्रामां आगळ वधे। तो આવી રીતે જાત્રાળુઓની સેવા કરવી એ બહુ મોટું પુણ્યનું કામ છે। तो भगवान तक पहुंचाना, भगवान तक पहुंचने की इच्छा रखने वालों की इस तरह से सहायता करना, उनकी सेवा करना, यह भी बड़ा काम है। इसलिए भगवान ने उनके ऊपर अनुग्रह किया, नारद के वचन को सत्य करने के लिए अनुग्रह किया, गायों की सेवा करी है इसलिए प्रसन्न होकर भगवान ने अनुग्रह किया, इत्यादि बहुत कारणों से भगवान ने दोनों पर अनुग्रह किया, दोनों को शाप मुक्त कर दिया और वे दोनों भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के धाम में गए। पेड़ गिरने की आवाज सुन करके और फिर सब दौड़े चले आए। क्या हुआ? न आंधी चली है, न ऐसा कोई भूकंप है। અને ભૂકંપમાં પાછા ઝાડવા ક્યાં પડે? આપણે ત્યાં ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે મકાન બહુ પડ્યા, પણ ઝાડવા ન પડ્યા। तो आंधी चली नहीं, क्या हो गया? ये पेड़ कैसे गिर गए? वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देख लिया था, तो उन्होंने सब बड़ों को समझाया कि कन्हैया जा रहा था, निकल गया, उखल फंस गया। तो कन्हैया ने थोड़ा जोर लगाया तो दोनों पेड़ गिर गए। बच्चों की बातें, उनकी तोतली तोतली भाषा। अरे ऐसा कैसे गिर जाता है लल्ला? बोले गिर गए। बारी बारी से गिर, एक साथ गिर गए। हमने देखा। बच्चों की बातें तो बच्चों की बातें होते हैं, हंसने में निकाल दी। लेकिन बड़ों ने इतना सोचा कि अच्छा हुआ कि लाला के ऊपर नहीं गिरे, हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ। बंधे हुए थे, उखल के साथ खोल दिया और फिर निर्णय किया कि नंद जी, यहां इस स्थान में पता नहीं बहुत उपद्रव हो रहे हैं, हम किसी अन्य स्थान में जाकर के रहें। और उपनंद के कहने से कि भाई यहां से थोड़े दूर वृंदावन है, दिव्य श्री गोवर्धन है, यमुना जी बह रही हैं, हमारी गायों के लिए हरी हरी घास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी और हम वहां जाकर के बस जाएं।